Good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. So welcome to regular participants. अभी नए गेस्ट आज अभी आ ही रहे हैं. So meanwhile we can start our discussions and recap of the last session. So in the last session we talked of emotions and emotional intelligence. So let's have a quick recap and see what was the takeaway and what was the learning point and what was the impact of that in your life. So anybody who would like to share that, most welcome. कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अपनी शेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं. And then we will move on to the topic today. And today's topic is very interesting and very powerful, in fact. So we're going to talk of emotions and love. Yes. All right, good. So let's have some people share. And meanwhile, welcome Jasmine ji. Welcome Praveen ji. काफी दिनों बाद आ रहे हैं. And पुष्पा जी नमस्कार, प्रणाम. यस. तो कौन शेयर करना चाहेंगे? पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? एंड कोई सवाल हो, कोई शेयरिंग हो? नहीं है? देन वी मूव ऑन विद द चैप्टर टुडे, विद द एजेंडा फॉर टुडे. हाँ जी. I think we discussed about if the connect, what is emotion and what is the connect between emotions and feelings, and then we also understood that in the chronological order, then it leads to something called action. I think it was probably an opening session for the forthcoming series, which, according to my understanding, is starting from today, where every week the effort is to choose one or two emotions which are interrelated to each other, and every week one or two emotions which are connected to each other. I think last week was more of a curtain raiser to set the tone. Absolutely. One thing, absolutely right, Amiji. That is exactly what we were planning to understand. Last time we just understood what are the emotions, like energy in motion, or the force, or the power behind every action. That is emotion. We understood that much, right? And emotional intelligence, we said, when emotional intelligence is the wisdom to experience and express your emotions in a natural way. So the question was, people were getting confused. Natural way क्या होता है? Normal way तो मालूम है. गुस्सा आ रहा है, सर फोड़ दो, नॉर्मल है. नेचुरल क्या है? तो नेचुरल की जो डेफिनेशन है वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं बिफोर वी मूव ऑन विद द सेशन टुडे. एवरी इमोशन हैज अ पर्पस, एंड वी विल सी दैट as we move on to specific emotions. We will see that every emotion has a purpose, and if you fulfill the purpose, then it is a natural way of expressing it and experiencing it. But if the purpose due to any reason is not fulfilled, then it is not the natural way. Not the natural way doesn't mean it is suppressed. It only means it is not the natural way. It could be suppressed, it could be repressed, or it could be simply not expressed. Okay. So in the sense that it could be an overdoing of things. So it can be expressed wrongly, it can be suppressed. So natural expression means fulfilling the purpose of the emotion. And we saw the one emotion, fear, we talked of. And we saw what is the purpose of fear. Purpose of fear is to take precaution. Yes, we discussed this in the last session. Fear का एक ही purpose है, precaution ले लो. Precaution लेने के बाद action लो fear को overcome करने के लिए. And we will see definitely more of it when we talk of fear. But just to tell you what is the natural way. So that was perhaps missing. I was watching the recording and I thought that this was perhaps missing. People didn't connect with it. So I need to understand. हर इमोशन का एक पर्पस है. उस पर्पस को अगर पूरी तरह से फुलफिल कर दिया तो वो नेचुरल वे से एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस होता है, वरना वो एक्सप्रेस नेचुरली नहीं हुआ, अब वो प्रॉब्लम करेगा. अंडरस्टूड? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? आई होप माय नेटवर्क इज कंसिस्टेंट. यस, ओके, गुड. सो नाउ वी मूव ऑन विद द. यस देवेश जी, आपने हाथ हैंड रेज किया है, कोई सवाल है या आप सिर्फ ओके कर रहे हैं? Okay, very good. All right, got it. Thank you. So now we come to the topic for today. Yes. So emotions and love. Now, as a human being, the most powerful emotion and the most consistent emotion which everybody desires, which everybody experiences and expresses is love. So this is the highest emotion a human being can experience. How many of you agree with me? How many of you agree with me? Yes? Yeah.
So there is no doubt about it. And now I take you a little bit to the spiritual world where we have often heard love is God, God is love. Yeah, love is life, life is love. ये सब सुना है ना हमने, और ये सब सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है. एक्चुअली लव इज आवर इंट्रिंसिक नेचर, हमारा बेसिक नेचर, हमारा एसेंस लव है. लव इज ऑल देयर इज. In the absolute world, there is nothing but love. When you say there is nothing but God, there is nothing but love. But why do you say this? हम तो बोलते हैं कि ब्रह्मन इज, क्या बोलते हैं, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, no qualities, no attributes. So how can you attribute love to God? So you have to understand what I'm trying to say. When you hear this statement, obviously this statement is in line with what Vijay ji had said in the morning. What did Vijay ji say in the morning? कि ब्रह्मन अगर निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, तो उसको ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट और ऐसे एनर्जी अचीव करना या वर्शिप करना, वर्शिप नहीं बोलूंगा, उसकी साधना करना बड़ा आसान है. पर जैसे ही आप साकार सगुण फॉर्म में आ जाते हैं, देन देयर इज कृष्णा, देयर इज पार्वती, देयर इज गणेश जी, देयर इज शिवा, एंड नाउ यू आर टोटली आउट ऑफ द, कौन से मंदिर जाऊं, पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है. सो यू कैन बी कंफ्यूज्ड. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सगुण और साकार फॉर्म में जब हम भगवान को मानते हैं तो उसमें क्वालिटीज होती हैं. सगुण है ना, तो सगुण में गुण तो होंगे. तो सतो गुण का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है लव. दैट इज व्हाई गॉड इज कॉल्ड एन ओशन ऑफ लव. सुना है? गॉड इज अ ओशन ऑफ लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम. ये सब हम क्यों बोल रहे हैं? ये सगुण साकार फॉर्म में हम भगवान की जब आराधना कर रहे हैं, तब ये क्वालिटीज हम उसमें एट्रीब्यूट कर देते हैं. क्यों? बिकॉज इफ वी थिंक ऑफ द डिवाइन, दीज क्वालिटीज विल कम इनटू अस. गेट दैट? जैसे अगर मैं एक वेबसाइट में जाऊं, यहाँ पे स्पिरिचुअल विजडम है, से डिवाइन हीलिंग वैली, हाँ, तो डिवाइन हीलिंग वैली के वेबसाइट में आप जाते हो और वहां से डाउनलोड करते हो, क्या मिलेगा आपको? फिल्म की स्टोरी मिलेगी? कोई फिल्म एक्शन मूवी की स्टोरी मिलेगी? नो, यू विल ओनली गेट स्पिरिचुअल विजडम. सो व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, सगुण साकार, भगवान को कनेक्ट कर रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको? आपको उनकी क्वालिटीज डाउनलोड होके आपको मिल जाएंगे. तो यू विल बी फिल्ड विद सतोगुण. दैट इज द पर्पस ऑफ एनी साधना. दैट्स व्हाई वी गो टू द टेम्पल्स, दैट्स व्हाई वी वर्शिप. तभी जोत जलाते हैं सुबह शाम, क्योंकि जिस भगवान की हम आराधना कर रहे हैं उनके साथ हमने कुछ क्वालिटीज डाली हुई हैं. गॉडेस वेल्थ, लक्ष्मी जी, गणेश जी, विघ्न हरता, राइट? So please remove my obstacles. Please give me strength to overcome my obstacles. When you're talking of Ganesh ji, when you're thinking of Ganesh ji, you are invoking that quality and then living your life powerfully. So that is Bhakti Yoga. That's what I said. There are two paths, Bhakti Yoga and Jnana Yoga. Bhakti Yoga में सगुण होगा, क्वालिटीज रहेगी. ज्ञान योग में निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है. तब आप उसमें ब्रह्मन पॉइंट ऑफ लाइट. So then God is light. So you have to understand, when we say God is love, we are talking of Bhakti Yoga, unconditional love, path of love, that is Bhakti Yoga. तो उसमें आप भजन गाइए, डांस करिए, भगवान की आराधना करिए, चैंटिंग करिए, मंत्र जाप करिए. जो मंत्र जाप नहीं, सिर्फ भजन गाइए, तो भी आप भक्ति योग में आ जाएंगे. So making sense? So a synonym of God in Bhakti Yoga is love. Now our essence, if God is essence is love, then our human essence is also love. हम तो उन्हीं के नेचर में हैं और हम तो गुणों उसमें भरे पड़े हैं. हम तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में भरे पड़े हैं. तो उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक जो गुण हमको चाहिए, वो क्या है? लव. So you access unconditional love, it will take you to the heights of consciousness, move you through the troubles of life and take you as a booster rocket की तरह आपको वो आपकी कॉन्शियसनेस को ले जाएगा ऊपर. मेकिंग सेंस? सो लव इज द एसेंस ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हमारा सबका एसेंस यही है, फिर वो चाहे जो मर्जी हो. इनफैक्ट लव इज द एसेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. यू हैव सीन अ कैट प्लेइंग, इट इज द सेम ब्लिसफुल स्टेट एज द चाइल्ड इज प्लेइंग. 2 साल का बच्चा और एक किटन को देख लो, दोनों उतने ही ब्लिसफुल होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं. सो एवरी लिविंग बीइंग इज एक्चुअली expressing and experiencing love. That is the basic purpose.
तो हमारा एसेंस भी वही है और सबसे बड़ा मोटिवेशन भी वही है. हमारे हर एक्शन के पीछे लव ही है. लव इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर. The purpose of all your actions is love. Yes or no? Try to just figure out. Either you are seeking love, or you are wanting love, or you are desperately wanting love, or you are experiencing love, or you are expressing love. हर जगह तो लव ही चाहिए आपको. तो आपके डिजायर में लव है. आपका फियर भी यही है कि लव खो ना जाए. आप डिजायर भी लव को करते हो. एज ए ड्यूटी ऑल्सो यू आर लविंग. पिता का धर्म क्या है? पुत्र की रक्षा करना, सेवा करना, फैमिली के लिए जो कुछ करना. व्हाट इज दैट? फैमिली लव. The soldier is fighting at the border. देश के लिए प्रेम है तो सब कुछ लव. Every motivator, the main motivator behind all your actions is love. Yes or no? So love is in every atom of the universe. Love is the essence of this universe. So love is God and God is love. That is the spiritual gyan of this emotion. Okay. Now we come to the basic definition. Yes, Vijay ji, go ahead. सर लव तो ठीक है, लेकिन वो कंडीशनल और अनकंडीशनल का जो फर्क होता है, व्हेन यू अटैच लव टुवर्ड्स एक्सपेक्टिंग समथिंग, उसमें थोड़ा लफड़ा है. वह उसमें लफड़ा क्यों है विजय जी? सो देखेंगे अगर हम, तो हम डिवाइन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स की तरफ जा रहे हैं. भाई अगर जैसे मेरी बेटी है या सड़क पे चलते हुए कोई लड़की है, उनमें दोनों में कोई फर्क तो है नहीं. तो व्हाई शुड आई हैव unconditional love towards my daughter and not unconditional love towards the other girl whom I don't know? Absolutely right. Absolutely right. So that is why we need to understand what we are saying love is not actually love. So I'm coming to it. What is love and what love is not? हमारे उस पे भी. That will give you some clarity. Okay. But first we have to understand love is God, God is love, and there is nothing else but love. फॉर ए ह्यूमन बीइंग. हमारा एसेंस ह्यूमन बीइंग का लव है. हमारे हर एक्शन के पीछे पर्पस लव है. फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक एग्जिस्टेंस के रूल्स. दिस इज ए रूल, दिस इज ए स्पिरिचुअल लॉ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ फर्स्ट, देन वी विल सी कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, जो आप बता रहे हैं. सड़क पे कोई लड़की जा रही है, उसके लिए अनकंडीशनल लव आ गया तो लोग मारेंगे. नहीं मैं झप्पी पप्पी की बात नहीं कर रहा हूँ. आई मीन इन जनरल, आई मीन अनकंडीशनल लव एज इन if she is in trouble, if she has an issue. It was a joke, just relax. Okay. Obviously when I have unconditional love for my son, it is very logical and normal. So what we have to understand is what is love and what love is not. Let's look at that. And meanwhile, Jasmine ji, आपने hand raise किया था. You want to share something? You want to ask something? जी सर, मैं यही थोड़ा सा इसमें मैं भी डिटेल थोड़ा सा जानना चाहूंगी, बिकॉज इमोशंस आर कनेक्टेड विद एज ऑल्सो. विद as we develop in age, the definition of love also changes. Like when you are a child and when you look at an infant, the love that comes out of you is absolutely pure. Then again, when we grow, there are conditions we apply. In puberty, we want to experience different kind of love. In 18, 19 age, we want to experience different kind of love. Middle age, then the love becomes more caring. And then in the old age, it becomes again demanding. So emotions play a big role in how we project and receive love. That's what I wanted to share. Okay, absolutely right. Whatever you said is absolutely right. Very good way of understanding the life. But in this session, we are going to look beyond this. Why? When I say beyond this, we are going to look at what love is and what love is not. Exactly the same thing what I told Vijayji. So just hold on. As I move into the next part, it will be clearer to you. And both of you have shared a very valid point. Yeah. So just hold on to your question. It will be answered in the next 5 or 10 minutes. Is that okay? Jasmine ji, is that okay? Yes, sir, absolutely. Yeah, perfect. All right, let's acknowledge Jasmine ji. Yeah. And let's also acknowledge Vijay ji for bringing a very, very practical experience of life. Okay. Now, let us look at what love is not.
Okay. First, let us look at what love is not. So love is more than a thought. So it is not only a thought, it is more than a thought. Everybody agrees to it? Love is not only an emotion, it is much more than an emotion, because thoughts or emotions आते हैं जाते हैं. Love is something which is long lasting or staying for a longer time. Yes or no? Yes or no? Yeah, at least we want it to stay there for a long time. ऐसा थोड़ी ना, today I love my wife, tomorrow I don't love my wife, तो गड़बड़ हो जाएगी. So we want that love to be there as a permanent thing in our life. It doesn't work out that way, that's a different issue. But we basically want love to be not a fleeting thought or an emotion. So it is not a thought, it is not an emotion. It is more than an attitude also. What is it? It is a state of being. State of being what? State of being divine. Because when you are in love, you invoke the divine in you. So it is a state of being joyful, being love, being divine. It's all synonymous. So state of being का मतलब क्या है? We are all human beings. There is a being part of it. Okay, but we have easily forgotten that we become our ego. We operate our life from ego, and then we do something. So and we have some results. So we have become human doings instead of human beings. We have become human doings, and then we have a result. So we have become human havings. तो हमारी लाइफ हमेशा डूइंग और हैविंग में निकल जाती है, बीइंग की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते. एंड बाय डिफॉल्ट हु वी आर बीइंग इज एन ईगो. हम ईगो का कोई फॉर्म पकड़ लेते हैं, दैट इज इन अवर बीइंग. एंड ईगो क्या है? इट्स अ ब्लैक डॉग. व्हेन यू आर बीइंग लव, यू आर इन्वोकिंग द डिवाइन व्हिच इज द व्हाइट डॉग. रिमेंबर द स्टोरी, व्हाइट डॉग ब्लैक डॉग. कितने लोगों को क्लियर है? हमारे अंदर दो लेवल्स ऑफ बीइंग हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक. Black is ego, white is divine. When you invoke divine, you are being love. I hope all of you are connecting with me. अगर कोई सवाल है तो पूछना है, ठीक है? So now we are being divine, we are being love. So ego sideline हो जाएगा. Ego को हम trigger नहीं होने देंगे, और हम being divine के through we are being love. So love is a state of being. Being what? State of being divine. So it is much more than a thought, much more than an emotion, right? So this is first thing that we need to understand. And what love is not, if you ask me, love is not a personal, selfish fulfillment of a desire. 99% of the people, or majority of the people, experience love as a personal, selfish fulfillment of some pleasure, of some desire. That is what is love. That is why we experience this as my. Selfish है ना? My son, my wife, my job, my home. Getting my point? तो एक तो हमारा लव का एक्सपीरियंस बहुत ही नैरो माइंडेड है, बहुत ही छोटी सी एक गली से होके गुजर रहा है. उसमें पर्सनल है, सेल्फिश है, और कोई फुलफिलमेंट ऑफ प्लेजर हो रहा है. Look into your life. This is very, very hard-hitting statement actually, and it is not cooked up by me. I've read it in the scriptures. Okay, ये ISKCON के teachings में मैंने पढ़ा है, जो which I liked it, and it really went through me. My experience of love is only a personal, selfish fulfillment of some pleasure. That is what I'm calling love. It is not that. Love is not that. Love is not a personal, selfish fulfillment of some pleasure or desire. जब तक हम इसको लव को इस नैरो फिल्टर से देखेंगे, हमको लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही है, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग लव, वी आर एक्सपीरियंसिंग सम परवर्टेड एक्सप्रेशन ऑफ लव. हमारा लव का एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल, सेल्फिश, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस बन के रह गया है. एंड व्हाट डज आवर स्क्रिप्चर से? लव इज व्हाट? नाउ वेलकम टू व्हाट इज लव. लव इज tireless service. Tireless service. It is a service. It is an action word. It is not a philosophical word. It is an action word. Verb है वो. You have to act. When you are in love, you have to act. And how you have to act? You have to serve. You have to take care, serve the other person.
टायरलेसली, ये नहीं कि कल तो करा तो था, टायरलेसली, कल किया था आज करोगे, कल भी करोगे, लगातार करोगे, बार बार करोगे, बिना रुके करोगे, और पूछोगे नहीं कब तक करना है, हर बार करोगे. टायरलेस, टायरलेस सर्विस टू द अदर पर्सन, right? It is a tireless service to the other person. Let me just read the right words. An act of service or contribution to the other person. Why? Because God is in them. So you're actually serving and contributing to the divine. So there is no mixturity there. Human being के साथ तो ईगो बीच में आ जाएगा ना, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसको मैं ये नहीं करूंगा. नो, आपकी सर्विस रुक गई. So it is a tireless service as a contribution to the other person. Why? Because the other person is divine. He is God in the human form. I am also God in the human form. So I invoke the divine in me. And then I serve the other person tirelessly, लगातार, बार बार, बिना रुके, as a contribution to the soul. Why? Because he is also part of the divine. I am also part of the divine. That is love. इस केस में विजय जी, there won't be any difference because you are serving. You're contributing to the other soul. फिर वो चाहे आपका बच्चा हो, he is not your possession. He is not an object. वो आपका possessive नहीं है, तो आप उसको भी उतना ही प्यार कर सकते हो technically as you can love the person on the road, because he is also God in human form. The other person is also God in the human form. But somewhere our experience as a human being is that it becomes a little personal or very, very personal. It becomes a little selfish or become very, very selfish. And it is a pleasurable experience. हमारा कोई pleasure fulfillment हो रहा है. That is the problem of love, how we experience. So the perfect way of experience. हाँ जी विजय जी. हाँ, मेरा ख्याल that's where the mind comes in, you know. Yeah. The, So the you stories have to. that it brings. So first we have to understand the law. The spiritual law क्या है? Love is a law. It's a law of life. You have to understand the law, then apply it in our life, and get freedom from our get freedom from our small selfish pleasurable desires. Right? Yes, Dr. Vansh, you want to say something? Okay, Dr. Vansh, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है. Yeah. All right, so making sense? So it's a huge statement. If you just listen to it, it will be a huge statement. Think about it. It is going to be very, very profound. Yes. So let's have some people share, and then if you have any questions, we will take that. Yes, Kunchan ji, go ahead. सर जैसे 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 स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही थी, वैसे वैसे सामने ही आ रहा था ये चीज कि यू नो सेल्फ लव में आ जाओ, सेल्फ लव में आ जाओ. तो पता ही नहीं था कि सेल्फ लव, अरे खुद को कैसे प्यार कर सकता है कोई. तो स्टार्टिंग जो हुई थी तो वो भगवान को गालियां देने से हुई थी कि क्या इसको प्यार करें, क्या दिया क्या आज तक इसने, इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, तो कुछ मिला तो है नहीं, तो 10 गालियां दी. बट देन अ डिवाइन इवेंट हैपेंड इन माय लाइफ एंड पहले मैं गुरबानी पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, क्या लिखा हुआ है, ये क्या बकवास है, समझ ही नहीं आ रहा. खसम एक वर्ड होता है पंजाबी में जिसको हस्बैंड कहते हैं. तो मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं खसम पढ़ के आ जाती थी बीइंग अ डिवोर्स्ड वुमन. सो मुझे होता था कि चलो खसम आ गया वर्ड गुरबानी में, शादी हो जाएगी बस, अब जल्दी से सेटल हो और काम खत्म हो. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड इन्वोकिंग डिवाइन लव इन मी, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग गुरबानी, एंड दैट वाज अ ह्यूज इवेंट इन माय लाइफ. जब मुझे पहली बार किसी ने कहा कि हम हुक्मनामा पढ़ते हैं इसमें हर रोज गुरबानी में, हम हुक्म लेते हैं कि भगवान से कि आज का क्या हुक्म है हमारे लिए.
तो वो हुक्म मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो एक अंकल आए वहां, दे आज मैं तेरे को समझाता हूँ गुंजन, तू अपने आप ससुराल पहुंच जाएगी, तेरा खसम तेरा वेट कर रहा है। तो मीन्स कि तू अपने आप डिवाइन तक पहुंच जाएगी, डिवाइन इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। So it was a huge message and that changed my life completely. And वहां से मेरा सेल्फ लव मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ, एक्चुअली व्हाट इज लव, वेयर इज लव, what is unconditional love, who can love you unconditionally? Only one person up there sitting somewhere in the air, I don't know. Only he can love you unconditionally, and there are many layers of unconditional love, many layers. It's like onion, it's not like, सर सुबह से सोच रही हूँ मैं इस टॉपिक पे सॉरी। इट्स लाइक अनियन एंड देयर इज वन, एक गांठ देखिए आपने अनियन की जो बांध के रखती है, और कितनी लेयर्स हैं उसके ऊपर, कितनी लेयर्स हैं। कभी स्ट्रिक्ट होता है कबीर की तरह, कबीरा खड़ा रास्ते में, तो कभी बिल्कुल एकदम खुमारी की तरह, मीरा की तरह, तो कभी एकदम बुद्ध की तरह काम एंड क्वाइट। But every aspect of love is different. Like way of showing love is, there are so many ways of showing love. So many ways. Absolutely perfect. Brilliant. Brilliant, Gunjan ji. Very good. बहुत बढ़िया. Fantastic sharing. Very good. I didn't feel like stopping you, but then Thank yeah, you. you would have gone on, and I obviously Yeah. want my guest also to share something. I was shivering. I was shivering when I was Yeah, talking. I can really feel that your emotions are really flowing. Well, one thing Yeah. brilliantly said by Gunjan is that you can experience unconditional love only with the divine. Humans के साथ ego trigger हो जाता है ना. See, जितने अच्छे फ्रेंड हो, जितने अच्छे रिलेशन हो, जितने अच्छे फैमिली मेंबर हो, right? The moment you think of a person, you always think of, you have a mixed emotion. अच्छा है लेकिन उसने उस दिन ऐसा किया था, so there is always something which is, and we take that to divine also. तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बचपन में मेरे साथ ये हुआ, बचपन में वो, you are having complaints with God also. But overall, we can say God is somebody with whom you can have some unconditional love. So don't look for unconditional love with people. That is why Bhakti Yoga is so important. Relate to divine with the unconditional love. So what? एक second आ रहा हूँ सर, विजय जी आ रहा हूँ अभी एक मिनट में. You have to understand Bhakti Yoga as, like you cannot find an avatar in the human being. Human being को हम divine नहीं बना सकते, क्योंकि human being में कुछ ना कुछ खामियां हमारे अंदर भी रहेंगी, और हमारी सोच में भी रहेंगी, और उनके अंदर भी रहेंगी. So you cannot divinize a human relationship, but we can make the divine and worship them as somebody like Lord Krishna, as a Gopal Krishna. Now we have brought a divine entity or a God as a child, correct? As a friend, as a, like Arjuna did in the battlefield, as a coach, as a life coach. He actually did that life coaching there, right? So you have to understand, we can bring divine as humanize a divinity instead of divinizing a human relationship. तो human being के अंदर unconditional love ढूंढने की जरूरत नहीं है. What is the perfect way of unconditional love? Connect with the divine, fill yourself with unconditional love, and share that love with people. Because you are invoking divine in you, now you will be able to share that love with other people, and in the process you will heal them. So when we are healing people, that is exactly what we do. We are sending unconditional love to people, and unconditional love is bound to heal the people. उनकी darkness में जाके वो light जगाएगा ही जगाएगा. That is the whole purpose of life, and that is how you contribute to a soul, and that is the whole purpose of healing. That is the whole process of healing, actually. Yes. Okay, so that is a gyan for today. So I will take Vijayji's question, and then I will request Amitji. Amitji, gear up for being the moderator, because you will be taking over the discussions and the question answer session. I am here to support you in whichever way. Yes, Vijayji, please go ahead, and then Amitji will take over. Yes. शशिधर जी, मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है इस विषय में, क्योंकि ये जो हम लोग डिविनिटी की बात करते हैं, डिवाइन को अलग से सोचते हैं, या सोचते हैं कि दूसरे आदमी से कुछ एक्सपेक्टेशन
love ki rakhna and all that. I think we are somehow going in the wrong direction of discussion. As long as we understand that we are all one, there's oneness, and nobody of us is perfect, तो फिर वो expectation खत्म हो जाती है. If there is no expectation between two people, then you only pass on unconditional love. So that is the beauty, I think. You know, It is the same thing. You don't really need God. You don't need to bring in Krishna. You don't need to bring in Ganesh ji or anybody. Between us, we are all, I mean, actually just on our ways. And at the end of the day, we may be all different, but we are still one, because we are programmed and we are going in our ways of life in different ways. But as long as, and it is actually a smart thing to do for your own happiness, that you spread love and happiness all around you. Yes, absolutely right. It's a selfish motive that I want to be happy. I want to be loved, so I just be unconditional in the situation. You know? Yeah, it's very true. So this is what you are saying is absolutely right. It is not against what we said. It is a build up on that only. It is not against it. Okay. It is just one extrapolation of what we have discussed now. When you see divine in the other, you will serve the other person because the divine is in him. That is the truth. मैं क्या बोल रहा हूँ ज्यादा सोचने के बदले में ये सोचने का कि we are also no different. I mean, we are all on journeys. Yeah, we also have our negatives, our positives. Other person also has, because of our own lives, our own circumstances. Everybody's story is different. Absolutely, Vijay ji, you are absolutely right there. Right? You are absolutely right there. Only thing is, इतनी सुलझी हुई सोच कितने परसेंटेज लोगों के पास है? और practically life में देखा जाए तो. Okay, so I'll just share something from my life. You know, just an example. I'm not talking of human being. I'm talking of a cockroach. I used to hate cockroach. Hate cockroach in the sense that repulsive feeling आती थी, disgusting feeling आती थी मुझे. वो उल्टा होके हाथ पैर चलाता था, मेरी vomiting हो जाती थी मेरे से. As a kid, so it was something very, very disgusting for me. You get that point? So, and I used to hit. Hit means जब तक मार के नाली के अंदर ना फेंक दूं, मैं बाथरूम के अंदर नहीं घुसता था. It has to go out of the life, out of the you know, out of my sight. मार के उसको फेंकना है. Last ठिकाने लगाने के बाद I would take a bath. And that is the kind of thing, right? Disgusting. Approach was, emotion क्या था? Disgusting था पूरा मेरे लिए. Now when I see that nothing has changed in the cockroach, cockroach is still the same, right? Okay, I have grown up, but still, even as a grown up, I used to hate cockroach. I used to really, really hate cockroach. But now when I see that, I simply say, God in the form of a cockroach. तो चला जा, तंग मत कर मुझे. Mind your own business. Let me do my job. I will let you do your job. वो 1 मिनट में चला जाता है फिर इधर उधर. वैसे भी अंधेरे में ही दिखता है वो. अचानक अंधेरे में जाओगे, लाइट जलाओगे तो दिखता है, उसका तो भाग जाते हो अपने आप ही. तो उसको पीटने की जरूरत नहीं है. Now, so approach from hatred or disgust to acceptance and love is a process. It's a process, right? So I was actually sharing that in one of the, I was just listening to one of my coaches in one of the programs, and he said how to actually transform a list of, पहले चीजें बनाओ लिस्ट की, प्रवीण जी knows, लिस्ट बनाओ जो चीजें आप हेट करते हो और उसको देखो कैसे आप improve कर सकते हो. So one of the items I had mentioned is, cockroach. I used to hate the sight of it. And then how it actually went on is, पहले hatred था, hatred से पहले मैं उसे ignore करने लग गया. First I started ignoring it. Then I started tolerating it. ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा इधर उधर. उसके बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया. कैसे एक्सेप्ट कर लिया? गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म. मैं गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म हूँ, वो भी लिविंग बीइंग है. वो गॉड इन द फॉर्म ऑफ कॉकरोच है. उसको पीटने की जरूरत क्या है? मारने की जरूरत क्या है? राइट? एक्सेप्टेंस हो गया. नाउ तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन. वो वहां रहता है, आई एम ओके विद इट. मैं अपना काम करके आ जाता हूँ, मैं चला जा, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, सो जस्ट गो. वो चला जाता है फिर. सो it has come to at least the acceptance now. I don't say I love cockroach, but I simply say I accept the cockroach the way it is. That is fine. So you get my point. It has to come with growth. अब ये कॉकरोच था. आप इंसान के बारे में बोल सकते हैं, किसी एक इंसान ने बहुत तंग किया आपको, आप उसको हेट करते हो, वो मर खप गया, जा चुका है, लेकिन हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं उसको. There are some people in my life who have gone out of my life, right? So instead of hating them, first ignore. अगर अभी भी हैं तो
Ignore karo, tolerate karo, accept karo, and then you can move on to the position of love. So hatred is only 2 steps away from love. It is a perverted version of love. That's all. सही लेंस लगा के देखोगे, hatred भी transform हो जाएगा love. You should know the process. Yes. So Vijay ji, it was a long answer to your one query, but I hope I've given you the thought. If you, अगर आपकी सोच इतनी सुलझी हुई है तो problem नहीं है. Then you can see a oneness in everybody and you love all. Like we say in tennis, love all. Play the game. Play the game of life now. Yeah. All right. Thank you. Thank you, Vijay ji. Let's acknowledge Vijay ji. Very good. Yes, Amit ji, over to you now. So Amit ji is the moderator for the discussions and the QA session. He has taken the accountability with a lot of passion, and I'm really grateful to him. Thank you. Thank you, Amit ji. Yes. Thank you for giving me this opportunity. I think the idea why it came up that there were some times when we thought that maybe this session needs to maybe stay on a track, or if there are questions which are coming which were not necessarily a point of this or the subject of the week, it is also okay to take those points. So I think we were deliberating, so we thought so there could be times when probably I can pitch in and probably give my views. But I think right now it is such an interesting conversation. I don't know how to and what is the need to moderate. But maybe I would like to share my experience of love, and which I've shared with you a few times and maybe a couple of more people. So when we say that there's a loving relationship that we have with our either spouses or parents or kids, I found that there are, I mean, it is obvious, not just me, but then we see that there are various ingredients that love is composed of, and 4 ingredients which are usually taken as a very clubbed, it's like a club of 4 ingredients, which becomes tough at times to segregate. Apart from, let's say, respect, understanding, there are 4 things which are usually very cohesively clubbed with each other. Those 4 things are attachment, which is more, responsibility, which is accountability, third being connection, and the 4th is affection. Now, if we look at very, very microscopically, there is a possibility to be able to differentiate between these 4, if I can call it emotions. I don't know, I mean, if these are emotions. So technically, I may not be using the best of the jargons. I would probably request that, try to understand the intention behind this. The 4 ingredients, which is attachment, second is connection, third is affection, and the 4th is responsibility, not in any preferential order. So in my own journey, probably I figured in the last 2 years, 3 years, and I did not know this before, is that when you find the ability to see these 4 ingredients separately, then automatically, scientifically, it also means that if you see attachment separately, then you can actually segregate attachment and start to operate or continue to operate from the other 3 ingredients, which makes love more worthwhile. And those 3 ingredients are obviously responsibility, connection, and affection, not attachment, which is more, which is, yeah, I don't know if there is any other terminology to it. So if it is making sense to all of you, some of you, I think when after this session, probably if you think more about this, okay, how can I see affection differently than connection? Now, connection is something of soul, and affection does not need to have the connection of soul. For example, this responsibility may not require connection. For example, responsibility towards our servant, for example, we may not feel a soulful connection with them. So when we probably do an inspection of all the relationship that we have around, and if you focus on these 4 ingredients, there is a possibility that we can segregate all these 4 and actually remove attachment, and then it is such a blissful zone to be in. So I think that's just one sharing that I felt like very good, Amit. Very good sharing. Yes. Yeah. If anybody wants to build on this, correct me, give your views on specific. So there are a lot more things, like apart from these 4 ingredients, we understand that there is respect also, which is needed in the relationship, and even the understanding and so on and so forth. But I think this has been one of the most profound learnings in the last 2 years for me.
Very good, Amit. Let's acknowledge Amit. Very good. I think this all comes from, once again, Q&As of the sessions like these. If nobody asks a question, obviously the learnings will not happen. When you talk about your cases, we all obviously start to relate it with our cases, and it falls so beautifully. So I think that's good. Thank you. So in case anybody else wants to ask a question, maybe people who have not talked, Rituji, today you are very quiet. I mean, you logged in late, so if you want to share a few things. And we also have a great awakened person, Dr. Vansh. He's a very famous, not necessarily famous, but very capable Ayurvedic doctor from Lucknow. I had the opportunity to be with him. So I think Dr. Vansh, we would also like to know from you, अगर आप कुछ share करना चाहे, your views, spiritual views around love, yeah, or otherwise anybody else. Can I share, Amit? Yep. Namaskar. Nice to see you after such a long time. Yeah, yeah. I just, I have been thinking about love because that is what I want to ingrain into me at this time of at this stage of my life. मतलब कि everything else is satisfied, finances, wealth, enjoyment, all has happened. Now I just want love. But I have been thinking about it, that a human heart knows only human love. It's difficult to imagine the divine love. Mm-hmm. So I don't know how I'm going to feel the divine love because I have a human heart. And when I send out that love, I embrace human beings. But still, I am not, I try to think of the divine, but that is not, I don't know how I'm going to do that. Yeah. Yeah. So I think you're right. I mean, I think it's very easy to create a vision or create a morphology of something that we want to relate to. But something which is shapeless, obviously it takes a lot of time and maybe forever to actually create a visual or something which is non-existing in the material world. So what you're experiencing is absolutely valid. It is okay. And we land up actually in that case seeing some divinity in the humans, some humans that we love, and it is okay to use those humans as a channel to actually experience the divinity through them. Correct me, Shashi ji, if I'm wrong. Before Yeah, absolutely right. Pravinji, just to build on what Amitji has said, wherever you are experiencing love, you are invoking divine in you. Very simple. So you see a 5-year-old playing or a 2-year-old giggling away to laughter, and that brings a smile on your face. You forget all the worries, and you are absolutely in a blissful zone. You're experiencing love for that child who is unknown to you. Maybe you are seeing him. Many times in fact, one of the times it happened, I was in the metro. I was watching a 2-year-old giggling away. एकदम सामने में बिल्कुल सामने बैठा हुआ था. And I actually missed my station. I had to get down at the next station and then take the metro back. So I would be so engrossed in that scene. मैं भूल गया सब कुछ. So if you're experiencing love in whatever, What you're saying, yeah, what you just said, I just thought about it because हमारे neighbor हैं right in front. A family stays. एक छोटा बच्चा है. He's must be about 7-8 years old. रोज सुबेरे नहा धो के, young child, baby, the boy, towel टांगेगा, सूर्य को नमस्कार करेगा, and from my heart the love goes to him because he's so sweet. मतलब कि बड़ी systematically towel अपना टांगेगा, systematically भगवान को नमस्कार करेगा उस time. And I don't know, the divine makes me see him every day. I don't know why, but I send out a lot of love to him. Yeah, absolutely. what you just mentioned. Thank you. So whatever you are seeing, and if it invokes love in you, that is, you're invoking the divine in you. Love is God and God is love. Simple. So wherever you are experiencing love, you are divine and you are seeing divine. So you don't have to visualize divine कैसे दिखेगा. जैसा तुम आप देखोगे वैसे ही दिखेगा. आप जैसा देखना चाहते हो वैसे ही दिखेगा. That's what he said in Bhagavad Gita also, no? You desire me as a friend, I will come to you as a friend. You desire me as a Gopal Krishna, as a small kid, I will come to you as a kid.
You desire me as a lover, I will come to you as a lover. So you can desire God in whichever form you want. Make it human. Make the divine human and fall in love. Okay. Yeah. Yeah, ये बोलते हैं that's ना, become easier. Yeah. तुझ में बोलते हैं ना, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, हो गया, कहानी खत्म हो गई, इसके बाद कुछ और नहीं चाहिए. Okay, but that kind Sir, of can love, I? unconditional love, has to be developed. Yes, yes, please go on. Sir, this divine love is universal in nature. When one has attained that level, we won't see any partition as human love. I am not able to understand कौन बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. Amit ji, Mr. right, help Yeah, me. yeah, okay. Okay, wait. So this is Mr. Yu. I think he's joined for the first time. If you introduce your name, that'll be great. Myself is Basuraj Reddy from Ballari, Karnataka. Nice. Thank you for joining. Yeah. So what is the No. question? Can you repeat? Not the question. You were discussing about the divine love and human love. Mm-hmm. When we say divine, it is only universal love. There is no distinction as to human love. We cannot differentiate. When you have attained that level of love, we love everything alike. Mm-hmm. Yeah, we cannot differentiate. There is no distinction. Correct. Yeah. So see, I think what he's saying is also correct. It is not incorrect. But at the same time, as I think sometime back, Vijay sir also said something on the same lines. I think we also have to understand there are various tools and levels which are used to explain what is love for various levels of people. So without getting into detail, for example, so there are coordinates also in the spiritual journey. Some people are beginners, some people are in the middle of the journey, some people may be towards quite a progressive level, though it's an endless journey that we're in. What you're saying is also a very evolved way to believe, and I think that's a very constant belief. If we're able to continuously live on this level, I think it's a great achievement. But at the same time, we also have to see that where does it all start from and can start from. Vijayji. Amit ji, sorry, again, I think I am completely in sync with Mr. Reddy. It's not about the levels of people. Let us not divide people. We are all one. In the see, what is the objective is to be happy. How can you be happy? If you create divide between people and you are happy and you are in love with some and you are not in love with some, or you're not in love with nature, or if you just see a cat sitting and enjoying and you can't love the cat, I mean, it's all nature. So, Yeah. and the whole objective is your own happiness, and you will be happy if you are in that universal zone of love, as Mr. Reddy mentioned, you know. The idea is to achieve there. It's good in satsang to discuss various things. I understand there will be people between ego and divinity in the journey. But the smart thing is to be focusing on the positive and trying to move towards positive, Correct. rather than focusing on the ego and focusing on the negative. That's what is my thought. Yeah, absolutely correct. Yeah, Mr. Anirudh wants to say something. हेलो, नमस्कार जी। Namaskar. या ये मेरे जो व्यूज हैं, दो बातें आई हैं, एक तो लव के बारे में और एक बच्चे के बारे में। मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली में जो लव को मैंने पहचाना है, हर एक आदमी का जो एम यही होता है, वो ट्राई करता है कि वो मेडिटेशन है, गॉड की डिवाइन की तरफ जाने की हर आदमी कोशिश करता है, और हर अल्टीमेट तरीका ये है कि वो गॉड लाइक बनने की कोशिश करता है। जब हम गॉड लाइक बनते हैं तो उस तरीके से प्यार करें, लव करें, जैसे गॉड को हम समझते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से सब हो जाता है। तो जो उसका जो प्यार है वो इमोशन से भी ज्यादा है। वो लव इज हिज लव इज, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं, बड़ा मुश्किल है उसको डिस्क्राइब करना। वो हम फील जितना उसके नजदीक जाएंगे, हम खुद ही अपने आप फील करेंगे वो हमें कितना प्यार करता है। तो वो प्यार जो है
वो प्यार हमें दूसरों में बांटना चाहिए जो गॉड हमसे करता है। उसका प्यार कोई कंडीशन नहीं है, फॉरगिवनेस में भरा हुआ है, हमेशा दूसरे की केयर करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऐसा बने, तो उस तरफ जाएंगे तो हमें भी हैप्पीनेस मिलेगी, इंजॉयमेंट मिलेगी। और लाइफ में यही चाहिए है, हमें पीस, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट चाहिए। तो उसके लिए है कि हमें गॉड लाइक अपने आप को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी थोड़ा ट्राई करना, मैं ये कहता कि 100% बने, हर एक आदमी को कोशिश करनी चाहिए, और कर भी हर आदमी करता भी है, उसको और ज्यादा करनी चाहिए। उसी तरीके से फिर वो अपने सराउंडिंग से प्यार करना चालू कर देगा। फॉरगिवनेस भी है, क्योंकि फॉरगिव तो एक बड़ा बड़ा है, और दूसरे को अपने, दूसरे को गॉड सबको अपना समझता है, तो हमें भी सबको अपना समझना चालू कर दें तो बहुत आसान काम हो जाएगा। प्यार, लव को समझना कि लव से बड़ी चीज कोई नहीं है, इसको आप कंपैशन कह लो, लव कह लो, इज ए सो बिगर थिंग, कि इसमें आप किसी से, दुनिया से या अपने आसपास से लव करने की भावना, फीलिंग आने से ही अंदर इंजॉयमेंट पैदा होती है। Yes. एक तो ये हो गया। दूसरा बात हो रही थी, बच्चे की बात हो रही थी। तो मेरा सोचना है कि बच्चा जो है वो प्योर फॉर्म में होता है, जैसे बात हो रही थी। प्योर फॉर्म का मतलब ये मेरा ये है कि उसकी सोल और डिवाइन मिला हुआ है, मर्ज होके वो जो पैदा होता है, तो उसकी सोल और डिवाइन मर्ज हुई होती है, वो मर्जी रहती है। बट जब वो बड़ा होता है तो हम ही लोग उसको थोड़ा सा गलत काम करने सिखा देते हैं, झूठ बोलना सिखा देते हैं। वो सराउंडिंग को देखता है, घर में देखता है, लोगों को देखते हैं, उसकी सोल और डिवाइन अलग हो जाती है, उसके बीच में लेयर आ जाती है। अब वो लेयर आ जाती है, अब वो हम पे डिपेंड करता है कि ज्यादा लेयर मत आने दें। तो वो फिर लेयर्स, फिर वो बाद में फिर उसको, फिर वो लेयर निकालने के लिए हीलिंग करनी पड़ती है। जैसे यहाँ बैठे हैं, हमें बैठना पड़ता है वही लेयर को निकालने के, हम भी यहाँ लेयर, वही लेयर्स को निकालने के लिए बैठे। तो अगर बचपन से ही अगर उसकी लेयर्स नहीं आएंगी तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वो भी, अगर पेरेंट्स चाहें, स्कूल वाले एजुकेशन चाहे, सराउंडिंग चाहे, तो वो भी बच्चे के लिए पॉसिबल है कि हम उसमें कम से कम उसको गलत आदतें ना आने दें। तो बस यही मेरा दो बातें कहनी थी बस। I think maybe you would have used a different words, but bhavna bilkul sahi. I think that is the right way a child progresses in social conditioning, cultural pollution, and then we take this healing. You're absolutely correct. So before I come back to you, Shashi, in case you want to say something, otherwise I want to address one of the questions of Devesh Singh Bhai. उन्होंने एक सवाल पूछा था बहुत देर पहले। उन्होंने एक लिखा था चैट पे कि why love is the strongest emotion. तो उस समय एक छोटा सा एक क्रिस्प वन लाइनर, दो लाइनर मेरे माइंड में आ रहा था कि एज हम लोगों ने सुना होगा कि द ट्रू नेचर ऑफ आत्मन इज लव। सुना होगा, पढ़ा होगा कई जगह पे। तो हम सब अपने इंट्रोस्पेक्शन में लगे रहते हैं। तो अगर हम देखें कोई भी चीज, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, आई थिंक वैसे शशि से बात कर ही चुके हैं इस बारे में, बट एनी एक्टिविटी दैट वी डू, जैसे बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग करना, ये वाले हीलिंग सेशंस अटेंड करना, या साइकिलिंग करना, या जो भी करना, हमको हमारी जो भी कोई हॉबी है, हम उसको पसंद करते हैं, उसको करना पसंद करते हैं, उसको करते हैं। आई थिंक एवरी नाउ एंड देन, एवरी डे 10 थिंग्स इन अ डे और 1000 थिंग्स इन अ डे, अल्टीमेटली व्हाट ड्राइव्स अस, देयर इज समथिंग व्हिच इज ड्राइविंग दिस सुपर कंप्यूटर, जो कि हमारे अंदर डायनामो अगर लगा हुआ है, हमारे अंदर एक पावर इंजन लगा हुआ है। तो अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि अल्टीमेटली वी लैंड अप डूइंग थिंग्स दैट वी लव। सो अल्टीमेटली देवेश भाई, अगर आप सुन रहे हो, तो अल्टीमेटली सारी चीजें, मतलब कि काम तो लोग अंडर प्रेशर करते हैं, चलो जॉब करनी है, नहीं मन कर रहा पर फिर भी कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट डिबेटेबल इशू। कुछ लोग पैशन वाली जॉब करते हैं या काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी एक्टिविटी दैट यू वांट टू डू, व्हाट इज द इमोशन दैट यू वांट टू अटैच विद दैट एक्टिविटी? जैसे वंस अगेन क्रिकेट खेलना या ये अटेंड करना, वो असल में लव ही तो है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ इट, ट्रू नेचर ऑफ आत्मन इज लव। हमारी बॉडी वही काम करने चाहती है, वही काम करना चाहती है हर बार, जिससे उसको लव अंदर फील होता है। आई थिंक देवेश भाई, in case if you wanted to know this, if this answer is good enough, otherwise back to Shashi sir. So thank you very much for this opportunity. Yeah. Okay, Sir. let's acknowledge Amit ji. Wonderful job, all Amit of ji. you, all of you. मैं तो कुछ भी नहीं। Yes. सब लोग देख Okay, couple of things came up, and before that, anybody else? Ritu ji, आप कुछ share करना चाहेंगे before I do the final closing summarization? Yeah. Yeah, I just wanted to elaborate on and
say whatever Dr. Mr. Reddy ji and Vijay ji had just said, I agree completely with that. That love एक तो unconditional है. The word has to be engraved in our subconscious mind कि love, true love वही है जो unconditional है. It's not कि I love A, I love B or C. It's exactly what the love of God is for us unconditionally. And unconditional love जो है हम लोग practice करें not only towards humans, towards nature, towards animals. And we can see this as like I'm a I have gardening as my passion and hobby. And you can see when you serve the plants, you talk to them, and when a new bud or a new leaf comes up, you feel that love, that उन्होंने मेरी love को accept किया है, unconditional love. They really accept your unconditional love so easily, and they'll come up with a new bud, new leaf. And similarly animals को जब हम love करते हैं, you see a dog coming up to you, उसको कुछ नहीं चाहिए, just pat his back and all, and he'll keep wagging his tail. कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमने क्या किया है, एक प्यार दिया है उसको, unconditional, and he'll keep following you everywhere. So that is what I feel, unconditional love हमें सिर्फ humans के लिए practice नहीं करनी है. We have to practice it towards everybody. And the most difficult thing what I felt was when I came into this spiritual journey is कि ये love सिर्फ अपने उनके लिए नहीं है जो तुम्हें like करते हैं, Then we come to that level that even if you don't like a person, you are not hating him. You're just sending good wishes to him. That is kind of a height of love. तब practice होती है, और ये practice से ही आता है. When somebody in a family or around you is saying something bad about you, and you still don't give it back to him and just say कि नहीं, you just pray for him कि God bless you with a positive frame of mind. And that is I think when you start going higher in your spiritual journey also. That is what I feel. Very good, Ritu. Very good understanding. Good sharing. Yes. Just building upon what Ritu was saying, one of my experiences was, like I was having a conversation with one of my coaches, and we were having the same kind of a discussion. Love all kind of a thing. Love nature. मैं कहा love nature को love करने में कोई problem नहीं है, because I have no expectations from nature, right? Loving animals and everybody is fine. मेरा पेट, मेरे कैट हैं, मेरे डॉग हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ, लेकिन स्ट्रे डॉग के साथ मेरा वो प्यार नहीं आता है. बट ओके, आई विल नॉट हर्ट देम एंड दे विल नॉट हर्ट मी. लेट देम गो देयर वे. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो हमेशा एक पर्सनल सेल्फिश मोटिव आ ही जाता है. मेरा पेट डॉग है, मैं उससे ज्यादा प्यार करूंगा रादर एक स्ट्रे डॉग के साथ. क्यों? व्हाई शुड आई लव अ स्ट्रे डॉग? आई विल नॉट हर्ट हिम. हाँ, रोटी खिला सकता हूँ मैं, लेकिन प्यार नहीं करूंगा उसके साथ में, नहीं करूंगा. क्यों? पर्सनल सेल्फिश मोटिव आ गया ना. So you have to understand, it is very very distinctive. अपने बच्चे के साथ obviously ज्यादा प्यार होगा, किसी और के बच्चे के साथ उतना प्यार नहीं होगा. केवल वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम. हेलो, आवाज आ रही है? कभी कभी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, लेकिन अभी ठीक आ रही है. मैं ये बोल रहा हूँ बेसिकली. सो द डिस्टिंक्शन जो है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी डिस्टिंक्शन ये है कि सबसे पहले लव इज नॉट ए पर्सनल सेल्फिश प्लेजरेबल इवेंट फॉर यू. उससे ऊपर उठना है. यही रोकेगा आपको यूनिवर्सलिटी की जो बात कर रहे हैं ना, विजय जी ने बात करी, एटी जी ने बात करी, कि अनकंडीशनल लव टू ऑल लिविंग बीइंग्स. इट विल हैव टू हैव मूव स्टेप बाय स्टेप. थ्योरेटिकली तो मैं भी बोल सकता हूँ अनकंडीशनल लव टू एवरीबॉडी. प्रैक्टिकली देखा जाए, आई विल लव माय पेट मोर देन एनी अदर पेट और एनी अदर डॉग. करेक्ट? मैं अगर मेरे जैसे आई रिमेम्बर एज ए चाइल्ड आई वुड गो टू माय नानीज प्लेस. हमारे वहाँ एक गौशाला थी पूरी, उसमें एक छोटी सी गाय थी. आई वुड प्ले विद दैट काउ फॉर 24 आवर्स. मैं वापस ही नहीं आता था. वेरी स्मॉल किड. मैं उसके साथ बैठ जाता था वहाँ गौशाला में, एंड आई वुड बी ऑल कवर्ड विद गोबर एंड ऑल दैट, एंड दे विल पुल मी अप, वॉश मी एंड देन पुट मी इनटू बेड, काइंड ऑफ अ सीन. So I used to love that cow. But if you ask me, can I love every cow like that? No, I won't. तो पर्सनल सेल्फिश मोटिव आ ही जाता है when you are experiencing love. So right now, अगर वहां पे भी हो रहा है, that is good enough. At least that is invoking the divine in me. Later on, with intelligence, I can extrapolate it to everybody else.
कि ओके गॉड, अब लॉजिकली थॉट क्या है, गॉड इज इन ऑल द लिविंग बीइंग्स, सो एटलीस्ट लेट मी, इफ नॉट लव ऑल, एटलीस्ट लेट मी स्टॉप हेटिंग ऑल। जिनको हेटरेड नहीं चाहिए उनको एक्सेप्ट तो करो। बिल्कुल वहां से आप इंप्रूव कर सकते हो। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली बोलना बड़ा अच्छा है, आई लव एवरीबडी, यू नो यू डोंट लव एवरीबडी। आपको अपने बेटे के साथ ज्यादा प्यार है, पड़ोस के बेटे के साथ नहीं है। अंडरस्टैंड इट, बट देन एटलीस्ट लेट अस एक्सेप्ट हिम and love our child more, but accept the others as they are also God in the human form. Let me serve them. You don't have to love them, but you can serve them. Correct? So love is an act, love is a verb. Serve them, contribute to them in whichever way you can. हर सोल को एक जैसा कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। जितना आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कर सकते हो, उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करो। बट इट इज ए टायरलेस सर्विस, it is a tireless service of contribution to souls, all the souls, living beings, just because divine is in everybody. Understand that is the truth. ये spiritual law है। इस law को समझ के हम apply करेंगे life में, you will move towards unconditional love faster speed. That is my point. That was the whole point of discussion, which I think exactly what Vijay ji said, or Reddy ji said, or even Anirudh ji said. That is how you can build towards it. Otherwise, it will remain theoretical. You have to start from where you are right now. You have to be very, very truthful, brutally honest. ये सच्चाई है मेरी आज की। अब मैं अगले कदम तक कहाँ जाऊंगा, तब आगे बढ़ोगे। वरना आइडियल सिचुएशन लेके चलोगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है, आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। Now you can't love a snake, you can't love a cobra, can you? No. Yeah. But you can avoid the cobra. Don't kill the cobra, you can avoid a cobra. तो पहले अवॉइड करो, एंड देन अगर कोई कॉबरा मिल गया तो उसको ऐसी जगह, वाइल्ड लाइफ को बुलाओ, उनको मारने की जगह पे, उसको जलाने की जगह पे वाइल्ड लाइफ को बुलाओ, दे विल टेक केयर ऑफ द एनिमल डिपार्टमेंट विल कम एंड टेक केयर ऑफ दैट, लाइक दैट। टेक एक्शंस which are appropriate for you to demonstrate that service to humanity. That is important. That is my point. Yes, Anirudh ji, you wanted to say something? Go ahead. आप कुछ बोलना चाह रहे थे? Mr. Bakshi also wanted to say something. Yes. Even Mr. बख्शिश जी बोल देते। हाँ जी, बोलिए। My younger brother is retired from a telephone department in Uttarakhand. आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, आ रही है सर। And he goes around in the evening or night and looking around. किसी ने अगर किसी डॉग को मारा है, कोई दब गया, तो उसको ले आता है घर पे, वो गवर्नमेंट डॉक्टर को फीस दे के बुलाता है, उसको क्योर करता है। तो उसने 7 कुत्ते अभी घर पे हो गए उनके, 7 dogs. And now he found a bull. The bull entered somebody's field and they hit him with a rod, with iron rod, and broke his leg. And my brother brought this bull home and उसको इलाज कराया, रोज मालिश करता हैगा, and the bull is all right now. And he doesn't want to leave the bull, and the bull also doesn't want to leave that place. तब वो नंदी जी की सेवा में लगे हुए हैं, और वो घर में झगड़ा हो रहा है कि जो वो नंदी जी की सेवा में उन्होंने अपना सारा दिन अपना टाइम लगाते हैं, और so it is the invoking of emotions or love जो है, it can be from the animals also. Absolutely, any living being. Human being it can happen with any living being. And correct. Going by what Bakshi says, it is easier to do with animals because you have no expectation from them. Human beings के साथ expectation आ जाएगी, मुश्किल होगा हर एक human being को love करना। Yes. तुम उस पे हर एक जगह कहोगे मैंने तेरे को कहाँ से कहाँ उठाया, ईगो आ जाएगा तुम में। हाँ, डॉग के साथ तुम ये नहीं बोलोगे देख मैंने तेरी जान बचाई, उसको क्या समझ में आएगा? तो उसके लिए बकवास नहीं करेंगे हम। So you need to understand unconditional love you can experience with animals much easier, or with nature you can experience it much better rather than with human beings. Human beings के साथ ego trigger होना बड़ा आसान है, इसीलिए unconditional love humans के साथ नहीं आता है, because they will come up with more things. आपको एक चीज होगा, ज्यादा प्यार करूंगा मेरा फायदा है ना उठा ले, मेरा कोई नुकसान ना कर दे, है ना? So all these things are there. Ego can kick in at a very at the slightest provocation. Ego will come up, फिर कहेगा भाड़ में जा, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, तूने मेरे साथ ये क्या, निकल घर से बाहर, वो फिर और कांड हो जाएगा. So you have to understand unconditional love is
very good theoretically, it doesn't work practically unless you move step by step. आज कहाँ हो, एक कदम आगे बढ़ा के आगे बढ़ो. That is how you will move towards divinity, which Anirudh ji rightly said. सब WIP हैं, अपनी तरफ से कोशिश करो एक कदम आगे बढ़ाने की. 1 किलोमीटर आगे बढ़ने की मत सोचो. एक कदम आगे बढ़ाओ. रोज एक अच्छे इंसान बनो जो दूसरे को एक अनकंडीशनल लव दे सके. सर्विंग, अनकंडीशनल लव मींस सर्विंग द अदर पर्सन बेटर देन. आज मैंने 5 लोगों को सर्व किया, कल 10 को करूंगा. दैट शुड बी द टारगेट. यस अनिरुद्ध जी, गो अहेड. आप ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हो जो आपने कहा है. मेरा ये कहना है इसके आगे कि ये एक स्टेप बढ़ते रहना चाहिए, हर एक को कोशिश करनी है, परंतु एक स्टेज वो आ जाती है जहां सारे पेट सभी से प्यार हो जाता है, सभी प्लांट से प्यार हो जाता है, सभी वो एक स्टेज वो. और ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं. मैं तो कई लोगों से मिल चुका हूँ, तो पहले पता नहीं था, अब कई लोगों से मिला हूँ क्या जो सारी दुनिया से प्यार करते हैं, सभी से प्यार करते हैं. तो वो स्टेज जब एक से करोगे सराउंड से, वो भी स्टेज आ जाएगी. जब आप अपने सराउंडिंग से करते तो बाकियों से क्यों नहीं कर सकते? बड़ी द हार्म. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसे ही जो आपने बताया काउज हैं, जो नजर आ रही है उनसे प्यार, जो नजर नहीं आती उनसे भी प्यार होता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. जो यहाँ दुनिया में दूसरे कोने में बैठे हैं उनसे भी प्यार हो जाता है. तो वो फील होता है. बिल्कुल सही है सर. मैं इसको एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस पे कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं थ्योरी नहीं कह रहा हूँ. तो ये ऐसे एक्सपीरियंस मैंने लोगों को देखा भी है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि प्यार हो जाता है. कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए दिल में पेन हो जाती है. तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमें डिवाइन की तरफ ले जाने में हेल्प करती हैं. और फिर मैं वही कहता हूँ, डिवाइन की तरफ जाने का मतलब है हमें अपना ही फायदा है, हमें अपनी पीस, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट मिलती है. हम किसी दूसरे का फायदा नहीं कर रहे, अपना ही फायदा कर रहे हैं. Absolutely perfect. And that is the right way to approach, right approach to life. That is the right approach to life. All right, very good. Anybody else who would like to share something? Dr. Vansh, कुछ कहना चाहेंगे? और कोई कुछ कहना चाहेंगे? Then we close the session, which is already 12 minutes over time. हम extra time में चल रहे हैं. तो last and final calls. Yes, गुंजन जी. गुंजन जी बोलना चाहती हैं. Yes, गुंजन जी. आ रहे हैं सर. Yes, गुंजन जी, go ahead. एक सेकंड मिस्टर बख्शी, उससे पहले congratulations to your brother and convey our blessings and our congratulations to him. Yes. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Thank you जी. Yeah, thank you. Good over to you. Yeah. Yes. Sorry, I'm really sorry. I'm not here to hurt anyone. But मैं बहुत देर से conversation सुन रही थी विजय जी की, अनिरुद्ध जी की and everybody. And I noticed that सब यहीं आकर रुक जाते हैं कि एंड में मुझे खुशी मिलेगी तो मैं ये काम करूंगा. Why there is a condition कि मुझे खुशी मिलेगी? नहीं वो कंडीशन, मेरा मतलब ये है, वो कंडीशन नहीं है. Hold on. Let her complete. Yeah, हाँ जी बोलिए. सर कंडीशन क्यों है? जब लव अनकंडीशनल है तो यहाँ पर कोई कंडीशन है ही नहीं सर. मुझे खुशी मिले ना मिले, मैंने प्यार करना है, मेरी ये ड्यूटी है. That's what I want to. That's what I noted. Very good. So that is your understanding. I love him. So that is your understanding. Absolutely right. Go ahead. सर मैं इसके बारे में बोलूं सर? एक मिनट आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ. 1 मिनट. तो गुंजन, if that is your understanding, you can go ahead and live your life on that. That is absolutely fine. You want to serve others without any conditions and not expectation. Correct? कोई expectation की आपको? No, nothing. Right. That is right understanding. Go ahead with that. That is perfectly fine. Ultimately सब लोग यहीं पे पहुंचेंगे. सिर्फ अपना देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है, बोलने के वर्ड्स थोड़े से अलग हैं, भावनाएं सबकी सेम ही हैं. सर एक छोटा सा एग्जांपल एक देती हूँ. जैसे मैं बीच में बोल पड़ती हूँ जब आप बोलते हो, एंड मेरा फोकस है आई लव माई गुरु, आई लव माई मास्टर, माई फोकस इज देयर. मेरे को कोई उससे मतलब नहीं है कि आप मुझे टोकते हो या मुझे आप डांट देते हो, क्योंकि आई एम टोटली फोकस्ड ऑन दैट लव थिंग, that I don't even care what are you doing with, how are you treating me, because the love emotion is so much high that things vanishes. Those things vanishes automatically. You got that, Gunjan ji. Thank you for that. And let me just repeat what I keep saying to Amit ji कि मेरी एक नेचर है, I am ruthlessly compassionate.
I am ruthless in my compassion. I am very compassionate, but I am very ruthless. I don't care how you feel about what I'm saying, but then if I have to wake you up, I will wake you up. It is as good as that. तो मैं पानी डाल के उठाता हूँ, जैसे मैं विजय जी को बता रहा था, मैं पानी मुंह पे मार के भी उठा सकता हूँ अगर कोई सो रहा होगा, तो मैं सोने नहीं दूंगा. ये मेरी कमिटमेंट है. So I am sometimes coming across as rude. So that is what Gunjan ji possibly is saying, that she doesn't feel that rude. But if I am rude, I am rude. I know that. Yeah. But I have to No, wake but up I people. don't feel, because I That's don't fine. feel it. So that is Yeah, your I don't greatness. But feel I it. am rude. I will accept that. Yeah. But the idea is not to show my power or ego. It is only to wake you up. And I will keep doing Yes, that. I will not stop. yes, Yeah. Yeah. That is why I have brought Amit ji here, so that he can do some balancing act. हाँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही उठाऊंगा लोगों को. Yes, Anirudh ji, coming to you. Go ahead. हाँ सर, मैं गुंजन जी की बात पे कह रहा था. दो बातें थी इसमें, कि खुशी अपने अंदर, पीस, हैप्पीनेस और जो एंजॉयमेंट है, वो जब दूसरी को हम खुश देखते हैं, उसमें अपनी खुशी देखना है. तो वो मैं उस खुशी की बात कर रहा हूँ, अपनी खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ. जो दूसरे जो सराउंड में जो खुशी है, उसको अपनी खुशी की बात कर रहा हूँ. नंबर 1 और जो मैं एक्सपीरियंस भी करता हूँ. और सेकंड जो बात हो रही थी, जो इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, वो मैंने इसलिए मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों से मिलता हूँ, लोगों में इतना, कईयों में सौरव में देखता हूँ, किसी में अनहैप्पीनेस देखता हूँ, दुख देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि सभी को पीस और हैप्पीनेस चाहिए. तो मैं इसलिए बोल देता हूँ, भैया तुम्हारी अपनी हैप्पीनेस, पीस के लिए तुम्हें डिवाइन की तरफ जाना चाहिए. तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं दूसरों के लिए बोलता हूँ. बिल्कुल सही है सर. मैंने कहा ना, दोनों की भावनाएं सेम ही है, सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट थे. आई कुड अंडरस्टैंड योर फीलिंग आल्सो, आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट शी इज आल्सो सेइंग. दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं. कि तो थोड़े से वर्ड्स इधर उधर हो गए और कोई बात नहीं. दूसरे को परेशान होते हुए दिल दुखी होता है, तो उसके लिए फिर अंदर से भावनाएं आती हैं, भैया तो खुश होने के लिए तेरा यही रास्ता है. एब्सोल्युटली. किसी को स्पिरिचुअल जर्नी पे डाल दो, इससे बड़ी सेवा हो ही नहीं सकती. राइट. ऑल राइट, लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी, विजय जी, Bakshi ji, Gunjan ji, and everybody. All right. Vanshi, before we close down, last words from you. वीडियो ऑन है तो कुछ बोलना चाहेंगे वंशी? खत्म होने वाला है. क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? एनी टेक अवे? समराइजेशन कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर वंश, आर यू एबल टू लिसन टू मी? जी नहीं, थैंक यू शशि जी, आपने बहुत अच्छा बोला. ओके. और मैं बस सीख रहा हूँ, बस आप लोगों से. ठीक कह रहे हैं सर आप. हाँ, चलिए कोई बात नहीं. Whenever you feel comfortable, you can share that. That is perfectly fine. All right. So with this, we come to the end of the session, and I hope this session was valuable. And very special acknowledgement to Amit ji for taking on the accountability of a moderator and the discussions. Let's have a round of applause for Amit ji. Thank you very much. Thank you. All right, great. So this is how we are going to continue. The question answer session and the discussions will be moderated by Amit ji. And जो शुरू में थोड़ा सा 15-20 मिनट का जो ज्ञान सेशन होगा वो मैं दूंगा. Then it will be an open discussion. And today I think all of you have spoken, all of you are self-expressed. So that is the purpose कि सबको बोलना है, वरना इसीलिए मैंने अपने बोलने का टाइम थोड़ा कम कर दिया है, हाँ, ताकि लोग थोड़े से ज्यादा इंटरेक्टिव रहें. All right. So with this we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Till then, Aham Brahmasmi. Thank you. Aham Brahmasmi. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Right.